Namaste. Good evening. Welcome to Swasthyameva Jayate. Welcome to Akanksha Desire for Wellness. आज स्वास्थ्यमेव जयते में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रुजुता मेहता. नमस्ते डॉक्टर. वेलकम टू आकांक्षा नमस्ते। डिजायर. सो डॉक्टर रुजुता से हम पहले भी मिल चुके हैं. आई वुड लाइक टू, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मिनट फॉर, बिकॉज टुडेज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. So I would like to introduce Dr. Rujuta. Dr. Rujuta is a well-established dynamic pediatric and pediatric hand practices at Nanavati Super Speciality Hospital, Sushrusha Hospital, Surya Child Care, KLS Memorial and Jaslok Hospitals. Her special interest is pediatric hand and upper limb disorders. Dr. Rujuta is the first woman to be on the Executive Council of the Bombay Orthopaedic Society. She is the chairperson of IOA Women Orthopedic Surgeons Forum. And earlier also on Akanksha Desire for Wellness platform, Dr. Rujuta had discussed on top 5 countdown of pediatric orthopedics, then orthopedic problems which are common among girl child. And today the topic is common childhood injuries and first aid. This is quite interesting because parents would love to know more about this topic. So welcome again, Dr. Rujuta. And moving Thank ahead you, to my the pleasure. फर्स्ट क्वेश्चन, जो पेरेंट्स या फिर कोई भी जो एक लेमैन अगर समझना चाहे, तो एक फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के बीच में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इफ यू कैन एक्सप्लेन, दैट वुड बी रियली ग्रेट. So, सबसे पहले fracture basically means if you put it in Hindi, टुकड़े. So टूटना, किसी चीज का टूटना. Now there are many ways in which a bone can break. One is if the child is running, jumping, so high velocity, fall from a height, or dashing against something, or motor vehicular accidents. So fracture basically means breaking of the bones, but it can be of various types. So not necessary कि दो टुकड़े हों. There can be multiple fragments also. वहीं पे टूट के भी रह सकता है. जैसे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर है क्या? तो हेयर लाइन फ्रैक्चर का मतलब सिर्फ ये है दैट वो अनडिस्प्लेस्ड है, और टुकड़े तभी भी हैं. इट्स लाइक आप अगर ग्लास की बॉटल लेते हो एंड उसमें एक ये आ जाता है, बट वो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है, तो दैट इज अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर. एंड ये अगर टोटली टुकड़े अलग अलग हो गए हो तो देन दैट इज अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर. आइदर वेज बोथ विल नीड ट्रीटमेंट. एंड फ्रैक्चर इज बेसिकली जो बोन्स के साथ होता है. डिसलोकेशन इज व्हाट हैपेंस टू अ जॉइंट. हर जॉइंट के दो हिस्से होते हैं, वन बोन एंड द अदर बोन, और दोनों के बीच में मूवमेंट होती है. तो नॉर्मली आप जब एक्सरे देखोगे आपको बीच में जैसा गैप जैसा लगेगा, बट दैट डजंट मीन इट इज टूटा हुआ. जहां ब्रेक नहीं दिखना चाहिए ऑन द एक्सरे, अगर वहां ब्रेक दिखे तो दैट मीन्स इट्स अ फ्रैक्चर. बट जहां नेचुरल ब्रेक है, अगर वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, जैसे हम रिस्ट जॉइंट कहते हैं या एल्बो जॉइंट कहते हैं, तो ऑल दीज आर मेंट टू फंक्शन इन वन एक्सिस. मूवमेंट इसीलिए दी गई है दरवाजे की हिंज की तरह कि इट्स मेंट टू मूव इन दिस एक्सिस, सो दे आर अलाइंड इन अ पर्टिकुलर वे. अगर वो अलाइनमेंट छूट गई, जैसे इट्स मेंट टू बी दिस वे, लेकिन अगर वो ऐसे हो गया, ओवरलैप हो गया एक दूसरे से, या वो जॉइंट से अलग हो गया, सेपरेट हो गया एक स्ट्रीम लाइन में से, तो वो होता है डिसलोकेशन. सो फ्रैक्चर बेसिकली जॉइंट्स के साथ डील करता है, सॉरी बोन्स के साथ, एंड डिसलोकेशन अप्लाइज टू अ जॉइंट. पार्शियल या टोटल, इट अप्लाइज टू अ जॉइंट. ओके. सो जैसे फ्रैक्चर्स की हम बात करते हैं, तो व्हाट आर द कॉमनेस्ट फ्रैक्चर्स जो आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जो बहुत कॉमन है, जो काफी दिखता है कि ऐसे रेगुलरली हो रहा है करके? तो व्हाट कैन बी दोज? हाँ, बच्चे तो सबसे पहले आई थिंक अगर आप सोचो कि दौड़ते दौड़ते गिरा, या इवन इफ यू एज अ पर्सन, इफ यू आर फॉलिंग, अपनी नेचुरल रिफ्लेक्स होती है कि यू विल, सॉरी आई विल शो इट दिस वे, यू विल स्ट्रेच योर हैंड आउट. तो फ्रैक्चर्स ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, जिसे हम फूश इंजरीज कहते हैं, दोज आर द कॉमनेस्ट इंजरीज दैट वी सी. नाउ व्हेन यू
जब आप हाथ फैला देते हो राइट फ्रॉम द मेटा मेटाकार्पल्स, यहाँ अपने ये हाथ से लेके रिस्ट, फोराम एंड एल्बो. फोराम एंड अच्छा. एल्बो इज द कॉमनेस्ट साइट जो बच्चों में फ्रैक्चर होती है, and it ओके. can go up to the humerus, but these are the common fractures that we see. ओके. ओके. सो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, wherein it said that can you get a fracture without any pain or an accident. तो फ्रैक्चर ऐसा हो सकता है कि हो गया फ्रैक्चर लेकिन कोई पेन ही नहीं है उसमें. इज इट हाँ, पॉसिबल? हाँ. So there are ओके. two types of fractures in that. एक तो जिन्हें हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स कहते हैं, कि हर बोन में देर इज अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स यानी यदि आप पूरा जार भर लो, एंड इफ यू टेक अ ग्लास बॉटल एंड उसमें बहुत सारे सीड्स डालते हो, ओके. अगर वो पूरे जैसे पैक्ड है तो दैट मीन्स आपकी सेल्यूलर मैट्रिक्स बिल्कुल अच्छे से टाइटली वाउंड है. अगर उसमें गैप्स आने लगे, पहले से सिस्ट मौजूद हो, या मेटाबॉलिक कोई अंदर शरीर में प्रोसेस हो जैसे रिकेट्स है या ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, बच्चों में खास ऐसा देखा गया है कि अगर उसमें कोई ऐसी पहले से वीकनेस हो, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, तो बैठे बैठे या ट्रिवियल ट्रॉमा से, कि जैसे यू डिडंट एक्सपेक्ट कि वो ऊपर से तो जंप नहीं किया है, या हाँ, स्लाइट हाँ. हिला एंड दैट थिंग हैज ब्रोकन, दोज आर नोन एज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स. एंड दी अदर काइंड ऑफ फ्रैक्चर ऐसे होते हैं कि किसी कोई कोई बच्चों में देर इज इनसेंसिटिविटी टू पेन, कि हाँ, जैसे हाँ. उन्हें पता ही नहीं चलता, या तो स्पाइना बाइफिडा, स्पाइन में कहीं कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से पाँव में नर्व्स का सेंसेशन नहीं है, तो वहां उनको जब फ्रैक्चर्स होते हैं तो उन्हें फ्रैक्चर हो गया है लेकिन उसके साइंस और सिम्टम्स पता नहीं चलते. या वेरी रेयरली टॉडलर्स फ्रैक्चर्स, जो काफी कॉमन होता है कि while the child is learning to walk, in that time if they fall down and यदि fracture displaced नहीं हुआ है and it is still tightly packed inside the bone, there will be a fracture, but the child may not complain too much. And एबिजेसिक जो generally parents off the shelves देते रहते हैं, after 2 days they realize कि नहीं, अभी भी swollen है, या they see कि वो हाथ या पाँव इस्तेमाल नहीं कर रहा है, then that also those are the signs and symptoms के non usage of an extremity. तभी भी you should always suspect a fracture if the child is not using the hand or the leg. Okay, okay. So in this case, can in some of the cases, can plasters be avoided या hospitalization करना जरूरी है? घर पे ही अगर कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, so I mean, how can that be done? इस जरूरी है क्या बच्चे को हॉस्पिटल में ही एडमिट करा के ट्रीटमेंट कराना है? So most of the time, it's a very nice question, Bhavani. Especially pandemic time, may we understand that parents are very very paranoid, and diagnosis होना बहुत जरूरी है. See, fracture treatment in the olden days was done by bone setters, which is not really recommended anymore. But if you manage to keep the fracture in the same alignment at home, at least the basic first aid one should know. तो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स जो होंगे उन्हें अच्छा प्लास्टर लगा के विद प्रोटेक्शन टू अ जॉइंट अबव एंड जॉइंट बिलो. जैसे इफ यू हैव अ फ्रैक्चर इन द फोर आर्म, इफ अगर इसको अच्छे से इमोबिलाइज करते हैं, रिस्ट की मूवमेंट प्रिवेंट करते हैं, एंड एल्बो की भी मूवमेंट प्रिवेंट करते हैं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ प्लास्टर डज. तो दोज कैन बी ट्रीटेड ऑन ओपीडी बेसिस एंड पेशेंट को घर भेजा जा सकता है. हाँ, जो डिस्प्लेस फ्रैक्चर्स हैं, जो जॉइंट के करीब है टू मच, या जिनके पास कोई नर्व जाती है, या फ्रैक्चर ज्योमेट्री ऐसी है कि इफ नॉट करेक्टेड तो वो ग्रोथ सेंटर के करीब है, तो स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं सर्टेन फ्रैक्चर्स के जिनके लिए हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है. बट नाउअडेज पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया इज वेरी सेफ. So just with an inhalational anesthesia, and within the golden rule is the first 48 hours में यदि आप hospitalize करके reduce करा देते हो, provided your first aid has gone well and you have prevented the displacement, so you can really अच्छे तरीके से within 2-3 days child will come home. ओके. ओके. सो लाइक पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जब इंजरी होती है तो व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच? लाइक पेरेंट क्या कर सकता है इमीडिएटली अपने बच्चे के लिए बिफोर
coming to you or before going to a doctor? First aid कुछ छोटा सा, if you can give a tip, you know. Yeah, sure. So सबसे पहले तो you have to calm the child down and you must not panic yourself. Yes, जितना yes. आप पैनिक करोगे उसे यू हैव टू टीच द चाइल्ड टू डील विथ इट. पैनिक करोगे तो नथिंग विल बी पॉसिबल टू डील इन अ रैशनल मैनर. तो फर्स्ट ट्राई काम द चाइल्ड डाउन एंड ट्राई एंड फील कि उसके कहाँ तकलीफ हो रही है. If the child is able to speak and tell you and show you, or if it is obvious to you, जैसे कहीं swelling है, displacement है, या पूरा there are children who come and tell you themselves कि मेरा हाथ टूट गया है, it's my hand was nice like this and then suddenly that part has fallen down. So those are very very obvious or displaced fractures. So whatever you have around you, just a few examples I'll give you. If you have a splint, then it is well and good. Otherwise, any straight object, like this is a chashma ka case. These are brochures, whether you are in your house, whether you are somewhere out. किसी भी लेडी के पर्स में आपको कहीं कुछ इतना थोड़ा तो मिल ही जाएगा. न्यूज़पेपर्स हो घर में. So if it is single, it is not strong enough. But if you are bunching all together like this in a well knit bunch, so this becomes like very rigid, like a fracture, and make like a plaster. एंड मेक श्योर दैट आप जो भी मोबिलाइज करते हैं उस बच्चे की फोर आर्म की लेंथ के साइज हिसाब से या व्हाटएवर, एक जॉइंट अबव, सपोज अज्यूम, लेट्स अज्यूम दैट फ्रैक्चर आपको यहाँ इन द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस दोनों बोन्स में हो चुका है एंड पूरा डिस्प्लेस्ड है. बट इफ आई जस्ट पुट इट इन अ स्लिंग दिस वे, एंड इफ दुपट्टा है, दैट इज अनदर वेरी यूजफुल टिप फॉर द पेरेंट्स. तो सिर्फ उस that part will not, you will not get pain relief. Many parents do this, they just hold it and come. Now if already it is painful, it is swelling up, and the parent is giving pressure over there, trying to prevent it from displacement, that is उससे ज्यादा तकलीफ होती है बच्चे को, and child keeps crying. So instead, if you put something really rigid like this properly and tie this up, so one joint above, one joint below, if both these are immobilized, और उसके बाद you put it in a sling. So let me show it to you. And the sling भी broad कर देनी चाहिए, tie it around the neck. And if you really keep it like this, you will see that the child is much more protected, and definitely that is the best way to bring about. अच्छा, if you don't have that, कई घरों में crepe bandage होती है. You can use a crepe bandage also to go around. If you don't have a plain bandage, just this you whatever you created as a rigid support, उसको crepe bandage से बांध दीजिए. बहुत छोटे बच्चे हों, you don't have any of these things, take a big gent's handkerchief, उसे triangularize कीजिए. Put a clip, butterfly clip तो हर जन के पास होती है, because to coax a very small child to put a sling on will be difficult. So do that and then just simply put it in, and then with a clip, big diaper pin or something, paste it to the body of the child or the clothes that the child is wearing. तो अपर लिम्ब में ये सब चीजें हो सकती हैं. लोअर लिम्ब में यदि एक जेंट्स बेल्ट मिल जाए, तो that also can be used. Even if you have anything which is straight and rigid, something like a perfume bottle or anything, so you would have to innovate and see then and there. जो आपको मिले पहले तो उसको अच्छे से rigidly support कीजिए, and at the same time remember RICE, RICE, rest, immobilization, cold compress and elevation. So जैसे अगर लोअर लिम्ब में फ्रैक्चर है तो बच्चे को आप यूं उठा के ले आएंगे, rather instead you cradle and गोदी में उठाइए, put 2 pillows below the legs. Even this, if you're at home, put it in a sling, let the child lie down and elevate it on 2 pillows firmly. तो RICE, राइस का दाना तो हर आदमी को याद रह सकता है. So rest, immobilization, cold compress and elevation, and no malish massage, no hot water fomentation. Try avoiding going to a bone setter. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बच्चों का फ्रैक्चर मीन्स बच्चों का खेल,
and हाँ, कोई भी कर देगा. We see हाँ, horrible deformities which happen. We see growth arrests which happen. Growth हाँ, arrest means every bone has a particular end जहाँ से bone की growth होती है. So if the fracture has gone through that, या तो while manipulating अगर वहाँ हो जाता है, elbow joint बच्चों का notoriously stiffness के लिए जाना जाता है कि elbow can get stiff very fast post op. So it's better to get to a proper pediatric orthopedic surgeon जो आपका एक्सरे ले सके, accordingly फिर permanent उसकी treatment उस ओके. तरीके से हो सके. But मैं I hope एक्चुअली, these few tips, I think in any household or in any woman's purse, you will always find 2 or 3 things which you will find useful for राइट, राइट. fracture immobilization. मैं आपसे पूछने ही वाली थी ये क्वेश्चन, Mhm. आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें से फॉर एग्जांपल हाइट अभी, सो Okay. अगर इस तरह का कोई इंजरी हो जाता है एंड देन व्हेन द ट्रीटमेंट इज डन एंड ऑल, तो जब बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो लेटर स्टेजेस में उसके हाइट में इफेक्ट होगा क्या, लाइक इन हिज ग्रोथ? इज देयर एनी काइंड ऑफ कोरिलेशन की हाइट उतनी बढ़ी नहीं जितना बढ़ना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस इंजुरी, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? So there is a big chance that the whole difference between adult fractures and children's fractures is ओके. that children have something जिसको epiphysis बोलते हैं या growing ends. So remember it as growing ends. So all growth centers are towards the ends. In the upper limb, we say towards the elbow I go, and from the knee I flee. So elbow में सारे growing centers will go more towards the elbow, and the growth will occur also in that fashion. And in the lower limb, पाँव में घुटने की तरफ से from the knee I flee. तो आपका अगर बच्चे को फ्रैक्चर नी जॉइंट के करीब हुआ है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि whether the fracture is passing through the growth plate. एंकल एंड नी, ये दोनों जॉइंट्स के करीब अगर फ्रैक्चर है तो वेरी लाइकली, तो इसीलिए हायर इमेजिंग भी लग सकता है आपको. प्लेन एक्सरे से शायद काम न बने, कभी कभी MRI CT स्कैन करना पड़ता है टू सी द फ्रैक्चर ज्योमेट्री कि एग्जैक्टली कहाँ हुआ है. एंड दोज नीड फिक्सेशन. लॉट ऑफ देम जस्ट नीड अ क्लोज रिडक्शन, दे टेंड टू डू वेल. बट यदि वो इंजरी को निग्लेक्ट किया जाए देन इन फ्यूचर फर्क पड़ता है. Overall height of the child comes from the spine, so fractures of the spine also are something which they have to watch out for. बट लोअर लिम्स में स्पेशली अगर एक पाँव में फ्रैक्चर है, बराबर ग्रोथ सेंटर में गया है, देन द डिस्क्रिपेंसी मीन्स दोनों लिम्ब में समानता नहीं रहेगी एज द चाइल्ड ग्रोज. So that is why pediatric orthopedics is a completely different ball game. So adult orthopedic surgeons many times they treat the patient, and then when a complication occurs, that is when they refer to us. Instead, the best thing would be is to first approach a pediatric orthopedic surgeon so that we can diagnose कि ये exactly is it a fracture which is likely to have any sequelae or problems in the future? Yeah, is this going to be a simple fracture which can be dealt with just with a plaster? Okay, okay. So one more thing I wanted to ask was, pulled elbows and sprains. ये भी एक problem है, तो how to deal with this problem? Yeah, pulled elbows are so very, very common, especially in the age group 3 to 5. And what happens is बच्चा शरारत कर रहा है, भाग रहा है, and somebody doesn't want the child to go from there, and they simply hold the child from the wrist, and they take you try to pull the child away. The child is pulling in the opposite direction because he doesn't want to come. So what हाँ, happens over there is कि it is many people think this as a dislocation. ये actually ये dislocation नहीं होता है, पर रेडियस या ये जो बाहर की हमारी बोन है उसकी एक कवरिंग, जैसे उसकी कैप स्लिप ऑफ हो जाती है, एंड दैट इज व्हाट कॉजेज अ पेन. एंड वो एकदम एक्यूट एंड शार्प पेन होता है. बच्चा एक सेकंड में दे विल स्टार्ट हाउलिंग एंड स्क्रीमिंग, एंड उसको ठीक करने के लिए लॉट ऑफ पीपल अगेन दे विल जस्ट होल्ड द एल्बो एंड ब्रिंग द चाइल्ड, विच अगेन कॉजेज मोर पेन. तो उसके लिए अगेन फर्स्ट सपोज पिकनिक स्पॉट पे हो या कहीं हो, there are typical methods of reducing it if the child is calm and composed. और यदि वो आपको न सूट करे तो बेस्ट इज टू जस्ट अगेन पुट इन अ स्लिंग, follow rice and bring to the nearest hospital or start ibugesic. If you can, if you are well versed, जैसे कि कोई बच्चे बहुत लचीले होते हैं, ढीले होते हैं,
in them. If you can gently, simply हाथ को आप धीरे धीरे उसको कन्विंस करके, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, बट Yeah. जो इसको प्रोनेशन कहते हैं हम, जैसे आशीर्वाद देना, प्रसाद लेना, तो प्रोनेशन फ्रॉम ये पोजीशन से, आशीर्वाद की पोजीशन में से धीरे धीरे प्रसाद की तरफ उसको करिए, एंड देन आस्क हिम टू स्ट्रेटन द हैंड, एंड दैट टाइम अच्छा. सिंपली सपोर्ट करके रखिए यहाँ पोर्शन को, बट डोंट ट्राई टू फोर्स एनीथिंग, एंड सर्टेनली 2-3 अटेम्प्ट्स तो नहीं ही होने चाहिए. जैसे इफ यू आर आउट इन अ ग्रुप या घर में 4-5 जन है, तो एवरीबडी ट्राइज टू गिव यू अ हैंड एट इट, वो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए. इफ द चाइल्ड इज काम, एक अटेम्प्ट होना चाहिए. नहीं हुआ तो देन जस्ट ब्रिंग इट ओवर एंड समबडी कैन ट्रीट इट. सपोज यू आर इन अ पोजीशन के जहां आप अप्रोच भी नहीं कर सकते किसी को, then just put in a sling and give ibugesic for 2 to 3 days and ice pack. Usually they settle down within 2-3 days. And ये बार बार हो सकता है, so never pull a child away. If you have to take the child away from the armpits, you should pick the child up rather than pulling at the wrist of the child. That is certainly avoidable. And sprains are, again, they are like ligament injuries. They are very common. दौड़ते दौड़ते पाँव twist हो गया, so again rise, elevation, and stop using the leg. I think the biggest commonest mistake जो लोग करते हैं कि 1-2 दिन अच्छे से रेस्ट किया and then they start walking on it again. तो आजकल एयर कास्ट अच्छे मिलते हैं, या wear a proper canvas shoe, and if you have boots or something in the house, so temporarily put the child in that so that he stops moving the leg, stops putting the leg down and walking on it. 10 days of rest is required to deal with a sprain. Braces and splints भी मिलते हैं रेडीमेड, बट दिस इज इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि स्प्रेन्स आर लिगामेंट टेयर्स एंड लाइफ लॉन्ग एंकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है. आपको फिर फुटबॉल वगैरह ऐसा कुछ अगर खेलना हो, स्पेशली बच्चों को तो खेलना होता ही है, तो उसमें फिर बार बार रिपीटेड स्प्रेन्स हो जाते हैं इफ द एंकल इज अनस्टेबल एंड यू एंड अप इनवाइटिंग सर्जरी. तो बेटर टू बी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके. सो एक मतलब आखिरी सवाल जो मुझे लगता है पूछना चाहिए आपसे, और वो है कि जो बड़ों की बात करते हैं तो कैल्शियम इज गिवन लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, डाइट में कैल्शियम, बिकॉज वो बोन हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग करता है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द किड्स, so do you think that calcium will really help them to heal faster, या फिर maybe it is a sign of weakness, कैल्शियम की कमी है तो इसलिए हील जल्दी नहीं हो रहा है? So is it equally important for the child also to take calcium like adults? Yeah. So yeah, definitely that's a very good question. And calcium is the main mineralization molecule हमारे शरीर में. बच्चों के केस में खास, they should get a double dose of calcium either through their food or through their supplementation if they are going visiting a regular doctor. Plain calcium again is not enough. Calcium plus vitamin D plus proteins. I would say all these three go hand in hand. So सबसे पहले तो diet, and who better than you to advise them on what would be the ideal diet. And it is not कि सिर्फ जब फ्रैक्चर हुआ या कुछ हुआ सिर्फ उस वक्त आप कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन करो. Your diet has to be enriched in these things from the beginning. So we have to build up good bone stock. Obesity is another risk factor, तो उससे थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है. Light exercise is good for the child, but this is assuming that there has been no fracture. Now fractures are dependent कि आप किस velocity से गिरते हो, किस force से बच्चा गिरता है, या किस height से गिरा है, या किस तरह की मार लगी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या ऐसा कुछ है. तो the mechanism of injury dictates the type of fracture that they get. But it's not कि कैल्शियम नहीं था and weak था bone इसलिए हुआ. That happens only in the pathological fracture variety. So as an additional booster it can be given, because temporarily during the fracture आपका bone stock will get depleted. So you will need to recreate the bone stock. पर वो देने से अगर कोई भी fracture takes 4 to 6 weeks to heal, तो वो देने से ये period shorten नहीं होने वाला है. And lot of people keep looking at the X-ray and trying to, parents they will ask you,
पर इसमें तो ये दिख रहा है, my doctor has, my pediatrician has never given calcium after the first year. Is it because of that? So fractures occur because of a typical method of, means the mechanism of injury. पर यदि आपका ओवरऑल बोन स्टॉक लो है, या यदि आपको कोई पैथोलॉजी है, तो रिपीटेड फ्रैक्चर्स अगर होते हैं, दैट यू शुड डेफिनेटली अलर्ट यू टू सम इन्वेस्टिगेशन के बोन डेंसिटी ठीक है या नहीं है. And in the pandemic, because children have been in the house all the while, sunlight exposure has been less. So vitamin D is definitely less. So overall, it's like, chronic धीरे धीरे वो erode हो रहा है. तो yeah, definitely it's a good idea कि जब कोई fracture हो या injury हो, as a supportive care, as a supplement, इसको additionally आप दे सकते हैं. Okay. And So kitna dena hai and all that will have to be actually, means, sat across the table and looked at the particular child and then prescribed. But as a rough rule of the thumb, just 250 milligrams a day, at least, if you make sure that जो भी calcium preparation आप देते हो, if it has calcium plus vitamin D3, that will be good. And stress on milk and milk products if you don't have an allergy. ओके. सो आई थिंक आपने बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर रुजुता सारे क्वेश्चंस का आपने सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन किया, सो दैट द पेरेंट्स आल्सो कम टू अंडरस्टैंड. एंड स्पेशली राइस, आई थिंक नोबडी कैन फॉरगेट दैट. ये रजिस्टर हो गया सबके दिमाग में. Immobilization, cold compress, elevation. I will again repeat rice. यस. सो इंडिया में, भारत में तो एक राइस के दाने पे पूरी गीता लिखते हैं लोग, ऐसे भी लोग होते हैं. सो आई थिंक राइस इज समथिंग विच इज यूनिवर्सली फॉलोएबल. And always first calm down, look in your purse. I think most mothers, I will give them that advice. Look in your purse, see what you have, immobilize one joint above, one joint below. So that is very, very important. And try and calm the child and ask him where is it hurting the most. तो ये सब देखना बहुत जरूरी है. बिकॉज पेरेंट्स भी पैनिकी हो जाते हैं बच्चे के साथ साथ, तो दे हैव टू कीप देयर माइंड कूल. या यू हैव टू बी काम. अब जो हो गया है, just deal with it. That is what I would say. So, Dr. Rujuta, thank you so much for this informative session, and I really look forward to meet you again, maybe with some other topic in the near future. So, thanks a lot, and thank you so much. Take care. Swasthyameva Jayate, and everybody stay safe. I think, Bhavani, the number of practical questions that you ask, आपके साथ बातें करते करते वक्त कहाँ निकल जाता है, we don't even realize. But it's a good initiative that you are trying to spread awareness about multiple things. So thank you for this opportunity. Thank you. Take care and see you soon with some other topic here. Thank you. Yes, certainly. Thank you.